Uh, Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। सो ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, ये पीडीएफ साइंस बुक का है, 6th क्लास एनसीईआरटी साइंस। You can see this is the NCERT science of 6th class, science textbook of 6th class. So मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए पहले, अगर वो ठीक लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं आगे उनसे आप शेयर कीजिए, लाइक टेट डीएससी या फिर टीजीटी पीजीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस की तरह भी हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो सी टेट मेनली फॉर पेपर 1 पेपर 2 सी टेट में या फिर टेट्स पेपर 1 पेपर 2 में भी ये आप लोगों को ये यूज़फुल रहेंगे। चैप्टर्स जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो चैप्टर्स आप लोगों के यूज़फुल रहेंगे। ऑलरेडी सिलेबस ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सिलेबस के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। सो रेगुलर मेरे चैनल को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स। सो हम देखते हैं इसमें हमारा पहला चैप्टर क्या है। Let's see our first chapter. See here, कंटेंट में हमें दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर है हमारा फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, सो फूड है, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम है। सो चलते हैं वो फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फिर सो और फर्स्ट चैप्टर इज़ फूड। सो यहाँ पे देखिए फूड के सोर्सेस, जो हम फूड को पकाते हैं डेली, हम जो पकाते हैं, जो डेली क्या पकाते हैं, डेली तो एक चीज़ कंपलसरी बनती है सबके घरों में, वो है चावल। चावल सबके घरों में रोज़ बनते हैं। तो चावल के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? द थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड फॉर टू प्रिपेयर राइस इज़ टू थिंग्स, दैट इज़ राइस एंड वाटर। ये दो चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ये हम दो चीज़ों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं हम दो चीज़ों को, ठीक है। सो एंड these are our activities, food varieties and activities, okay। and we take varieties of food। हम food को एक ही राइस एक ही हम डेली लेते हैं सिमिलरली, उसमें भी वेरिएशंस है, लाइक बिरयानी, पुलाव, and we take curries different for in a day, different curries we used to take as our food, and daily also we used to take different kinds of vegetables, yes, for our body, for our, according to our body needs or according to our taste। सो कहने का मतलब क्या है? मतलब हम वैरायटी फूड्स को लेते हैं, ओके, प्लांट्स या फिर मीट या एग्स, ओके, लाइक लीव्स, स्पिनच, लाइक दिस, ओके। This is about the food varieties, and these are the activities. If you want to check, please, if you want to know about the activities, I have zoomed it, please check this, okay। Now as you can see here, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फ़िश है, सी फूड है, एंड इडली, सांबर, लाइक दिस डिफरेंट फूड आइटम्स हम रोज़ लेते हैं, ओके नाउ। सो इफ़ वी मूव फर्दर, see here, food materials and sources। What are the food materials and sources?
हमारा फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, उसका सोर्सेस क्या है, ज़रा सोचिए। हम जो फूड लेते हैं उसके कहाँ से आता है वो फूड हमारा, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट, वो कहाँ से आते हैं, हम किस पे डिपेंड होते हैं। तो आंसर मिलेगा हम डिपेंड होते हैं मोस्टली प्लांट्स पे एंड एनिमल्स पे, राइट। Human beings, mainly human beings and other animals that eat both plants and other animals, depends on plants and animals, okay. सो हम अगर हमें ह्यूमन बींग हमारी हम बात करेंगे तो हम मोस्टली प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे हैं और एंड अदर एनिमल्स पे डिपेंड हो रहे हैं, ओके। सो हियर आर फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। हमारे सोर्सेस क्या हैं, हमारे सोर्सेस मटेरियल्स तो हम अभी पढ़ लिए थे। सोर्सेस क्या है हमारे फूड के खाने के, डिपेंड्स ऑन plants and other animals, okay, like egg, milk, meat, etc. Now if we see if we see see here, fruits, vegetables, fruits and vegetables and पैडी, रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हीट चाहिए होता है, ओके। रॉ प्लांट्स, हम रॉ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं एंड एनिमल्स पे हम डिपेंड होते हैं, लाइक मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स वी गेट। सो ये हम पूरा डिपेंड किस पे होते हैं, मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, ओके। उससे ही हमारा मटेरियल्स मिलता है, ओके। मटेरियल्स नथिंग बट व्हीट, पैडी, ओके। नाउ इफ़ यू मूव फर्दर, ये इम्पॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड होते हैं हम, प्लांट्स पे एंड व्हाट आर द सोर्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। नाउ सी हियर, this is another third activity. If you want to check this activity, you can check, I'm zooming it for you, so please go through that if you want. Regular students, if you want, go through that and please do that activity. If you cannot understand, please, if you're not understanding it, that do me a comment, I'll solve your doubts if you have any doubt in that, okay. See here, if in the picture, source of food grains. What are the source of food grains here? See here, in this picture, it is showing that, yeah, here milk cart and some sacks of paddy or wheat, okay. Source of food grains, or the source of food grains is paddy field and wheat grains transport. So this is the paddy field, so this is the paddy, this is the paddy field, if you can see. And we depend, paddy field is nothing but plants, and from the plants we get wheat or paddy, and that is the materials, and the source is plants, okay. Now if you move further, you have to fill this, I think you have to fill, yeah, you have to fill this. Food items is given, uh, food items is given, ingredients is given, source is given. So you have to fill this box, go through the activity and fill the box, okay. Now further, see here, okay. Now here if you see 1.3, 1.3, what is it, plant parts and animal product as food. यहाँ पे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, जो हम प्लांट पार्ट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को लेते हैं, यस, डिफरेंट डिफरेंट लीफी वेजिटेबल्स को खाते हैं, और वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। हम क्या करते हैं, प्लांट के लीव्स को हम वेजिटेबल्स या प्लांट्स के लीव्स को हम खाते हैं, फ्रूट्स को, रूट्स को, इवन स्टेम को भी हम कुछ कुछ प्लांट्स के स्टेम को भी हम लेते हैं, और इवन फ्लावर्स को भी हम खाते हैं। तो हम सभी पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं, ओके। लाइक pumpkin, like pumpkin, okay. Now if we see
if you see, here is the here is the plant. If you see, this is the plant, and different parts of the plants is given for different parts of the plant is given, like see here, flower. It is a flower of the plant, it's a fruit of the plant, and it's a leaf, and it's a leaf of the plant, and here it's a node. Node is nothing but, here it called node because a leaf is grown from the stem at there. So this intersection of this yeah, this stem and the stem and the leaf is another stem is going through that. So that intersection, this is called as, or this angle is called as node. Okay, what is the internode then? Internode is nothing but between two nodes, between two nodes. Okay, between two nodes we have an internode. Remember this is important too. Internode. Okay, what is bud then? Here it is a bud. Okay, here it is a bud. So this is the bud. If you see, this is the bud. Bud is nothing but it grows into a flower. Okay, or a leaf, new leaf. Okay, so now here bud, and this whole system, upper before you can if you observe, see here, if you observe the upper part of the soil, where the stem grows or where the plant grows, this part is nothing but a shoot system. Please remember, it called a shoot system. Okay, shoot system. What is a shoot system? It's here from the plant, from where it grows. See this part, the part from the plant is growing here from the soil, from here to the upper part of the plant. Okay, this is called the shoot system, where we find fruits, leaves, stem, and this is the stem of the tree, birds, node and internode. Okay, all this we find in the shoot system. Now what is the root system then? What is a primary root? What is a secondary root? What is a primary root? Okay, this is the root system. Below the, under the soil, we find that below, in the soil, not under the soil, in the soil we find this. Okay, say the primary node is nothing but, this is the primary node. And what is secondary nodes? We find this secondary nodes too, that is growing from the primary node. Okay, that is growing from the primary node. ये है main root, primary root. Okay, जो भी देखिए, ये है प्राइमरी रूट, यही मेन रूट होता है, जो इसको आप देख सकते हैं प्लांट्स में छोटे छोटे ग्रो करके आते हैं, आपको पता ही होगा। सो ये जो होते हैं ना, जो मेन रूट को ही निकल के आते हैं रूट्स, वो होते हैं सेकेंडरी। ये है प्राइमरी रूट। ओके, ये होते हैं जो छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं प्राइमरी रूट को ही, वो उसके हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। ओके, सेकेंडरी रूट्स और प्राइमरी रूट को मिलाकर हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। व्हाट इज़ द शूट सिस्टम? शूट सिस्टम में क्या होता है? सभी प्लांट्स, स्टेम, फ्लावर्स और बड, नोड, इंटरनोड, ऑल दैट वी फाइंड इन द शूट सिस्टम। एंड रूट सिस्टम में हम रूट्स वी फाइंड रूट्स, primary root, secondary root, etc. Okay, now if you move further, I hope you have understood. If you move further, see here what they are saying.
they are saying that some plants we take कुछ plants के हम दो से ज़्यादा चीज़ें भी खा सकते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ करते हैं खाने में हम, like here they have given some plants have 2 or more edibles, मतलब हम एक प्लांट का हम एक फ्लावर को भी खाते हैं, उसके पत्तों को भी यूज़ करते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मस्टर्ड एग्जांपल के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे. मस्टर्ड सीड्स का प्लांट हम जो खाते हैं, उसका सीड का हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, उसके सीड भी यूज़ करते हैं, और हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लीव्स भी यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल. ओके, एज ए वेजिटेबल. ओके, सो हियर हम प्लांट्स के 2 से ज़्यादा चीज़ों पे भी डिपेंड रहते हैं. एक प्लांट के 2 से ज़्यादा चीज़ों पे भी हम उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं हमारे. ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए. अब अगर आप बनाना की बात करें तो आप बताइए, बनाना के लीव्स हम यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं बनाना के लीव्स. आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए. बनाना हम यूज़ करते हैं, तो बनाना के प्लांट को हम एक प्लांट को हम उसके 2 चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं. आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर ऐसे कुछ प्लांट्स के एग्जांपल दीजिए जिसका हम 2 थिंग्स उसके हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ इफ़ यू मूव फर्दर अगेन हियर, ये क्वेश्चन, ये जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं ना, सोचने के बच्चे होती है यहाँ पे, और वो बच्ची सोच रही होती है, कुछ ऐसे सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं. यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, पहली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स. पहली यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर कोई भी पहले सोच रही हैं कि कोई भी अदर देन प्लांट्स एनिमल्स के सोर्स के अलावा हम किस पे खाने के फूड के ऊपर हम किस पे डिपेंड हो सकते हैं, अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो आप बताइए कमेंट करके, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा हम किस पे डिपेंड हो सकते हैं. प्लीज़ कमेंट इट. एंड see, if you move further, this is the table. You have to fill this table plant parts as food. Okay, ब्रिंजॉल, यहाँ पे हम ब्रिंजॉल करी बना रहे हैं. इसमें जो टेबल में बनाया है, इसके इंग्रेडिएंट्स उन्होंने लिखा है, उसके प्लांट्स के कौन सा पार्ट ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का. यहाँ पे ब्रिंजॉल फ्रूट है, chili also a fruit, and this is mustard groundnut, oil from mustard groundnuts. This is a seed, and you have to write another curry. Okay, and you have to mention the ingredients, and then you have to mention the parts of the plant from where we get which part of the plant we are taking as an ingredient in that curry. Okay, now if we move further, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सूचना दी गई है, मैसेज दिया गया है कि बच्चों के लिए जो भी ट्रीज़ हमें दिखते हैं आसपास, वो कुछ उसमें से कुछ जो अननोन प्लांट्स होते हैं उसके हमें नहीं खाना चाहिए, उसके लीव्स को, उसके फ्रूट्स को, बिकॉज वो पॉइजनस होते हैं. ओके, अगर अननोन प्लांट्स भी हम प्लांट ही है ना, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वो समझकर हम खा लेंगे तो वी गेट और बॉडी उसमें पॉइजनस चीज़ें हो सकती हैं और अपने बॉडी को हमें बहुत हार्म दे सकती हैं. तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ अननोन प्लांट्स की तरफ मत जाइए. इससे मिले मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर, हु आर स्टडिंग 6th class. Now if you move further, sprouted, what are the sprouted किसको बोलते हैं हम. यहाँ पे देखिए, ये मूंग दाल तो हमें रोज़ हम देखते ही हैं, डेली हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं मूंग की दाल को. मूंग दाल यहाँ पे हम अगर इसे 4 आवर्स के लिए हम वेट क्लॉथ में छोड़ दें, या फिर इसे हम वेट क्लॉथ में हम इसे छोड़ देंगे तो इसके रूट्स निकल कर आएंगे. इसे हम स्प्राउटेड कहते हैं. इसे ही हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड.
sprouted. Okay, I hope you have understood. एंड यहाँ पर भी देखिए ग्राम, ग्राम चना, चना को भी हम ऐसे ही करें तो इसके रूट्स निकल के आते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस. इफ़ यू टेक इन द इवनिंग एज अ स्नैक्स और इन द मॉर्निंग, इट इज़ वेरी हेल्दी. सो यहाँ जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा हमें खाना चाहिए. ये एक्टिविटी में बताया, एक्टिविटी 5 में बताया जा रहा है. ओके, मैं बस स्प्राउटेड का मतलब आपको बताई हूँ. ओके, नाउ सी हियर another important some word is there, that is nectar. See, this is here. What is nectar? जो हनी बीज होती है ना, जो हनी बीज कहाँ से लेती है, हनी बीज हनी कहाँ से कन्वर्ट करती हैं उनके हाइव्स में, कहाँ कहाँ से लेती हैं वो. तो हमें आंसर ऑलरेडी पता है कि वो फ्लावर्स से, वो जूस जो स्वीट जूस फ्लावर्स का जो सक करती है, वो जूस स्वीट जूस को ही हम क्या कहते हैं, नेक्टार कहते हैं. प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्टार हम किसको कहते हैं? जो हम जो हनी बीज स्वीट जूस को फ्लावर्स में से जो कलेक्ट करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, नेक्टार कहते हैं. और इस नेक्टार को वो क्या करती हैं, इस नेक्टार को क्या करती हैं, यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट करती है इनटू हनी. दिस नेक्टार ओनली, नेक्टार इज़ नथिंग बट द स्वीट जूस विच कलेक्ट्स फ्रॉम द फ्लावर्स बाय bees, and this nectar is converted into honey, and this is stored in their hives. जो hives, ये हनी बी का hive देखा है आपने, देखा ही होगा. ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड द हनी बी हाइव. और यहाँ पे जो स्वीट जूस को, नेक्टार को लेके यहाँ पे वो हनी के उसमें कन्वर्ट करती है. देखिए ये हनी है. ओके, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस, और उसका इस्तेमाल करती है ईयर्स तक वो. ओके, सो नाउ नेक्टार का भी आप लोगों ने देख लिया. नाउ लेट्स मूव टू द 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट. यहाँ पर आप देखिए, व्हाट डू एनिमल्स ईट. अब एनिमल्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बीन ऑल्सो एन एनिमल, बट ह्यूमन बीन डिपेंड्स बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द अदर एनिमल्स ईट्स. ओके, so if you see here squirrel eating nuts. Mostly I have seen squirrel eats carrot nuts, like that. Okay, here pigeon eats some small insects, lizard eats insects, squirrel eats some other nuts and like this grains. Okay, now so what do you mean this? By this, what we mean? We mean that some animals only depends on plants, and some animals only depends on other animals, and some animals like human being, like uh, if I say cat too eats cat too eats meat, and it takes sometimes it takes milk and other food, like maybe or not, but yeah, human beings and other animals depends on both on plants and animals. Okay, so here see here, this is the activity 6. Like buffalo only eat grass, goat, buffalo, and buffalo and goat, etc. Depend that are these animals only depends on grass, that means plants. Okay, and lion, tiger, cheetah, that depends on other animals as their food. Okay, for as their food source. But human beings depends on both plants and animals. Okay, so what we call these three types, based on the food we can differentiate the animals by based on the taking of their food. Okay, let's see how we can differentiate. See here, the animals which takes only
vegetables are called herbivorous animals. Okay, are called herbivorous animals, not herbivore, only herbivorous. Okay, like buffalo is a herbivorous, goat is a herbivorous, cow is a herbivorous. Okay, and butterflies, like etc. So these are called herbivores. Okay, these depends only on what, only on plants. Now what is mean by carnivores? Carnivores is nothing but the animals that only depends on other animals as their food. Okay, as the food source. Other animals means like yeah, lion, tiger, cheetah, etc. That is called carnivores. Herbivores, carnivores, these are important for you, these are important. And omnivorous, what is omnivorous? Omnivorous is nothing but the animals which depends both on plants and animals, other animals. Okay, the plants and like human being is a omnivorous. So herbivorous, plants only on depends on plants, carnivorous only depends on other animals. But omnivorous depends both on plants and animals. And carnivorous it depends on, carnivorous depends on only on and other animals. Okay, omnivorous depends on both plants and animals, herbivorous only on plants. Okay, based on the type of food the animals take, we have divided the animals into three types, that is herbivorous, carnivorous, omnivorous. Okay, herbivorous, carnivorous, and omnivorous. Now, if you move further, these are the important. You have to note down. If you want to note down, you please take your notes and note down in your notes these points. Okay. Now, if you move further, now see here. Paheli is asking another question here. Where do you place human beings while filling the table? Which table? I think the above table. Yes, this is the above table. Human beings comes in under what? Please comment in the comment box. Already I have said. Now, now, now these are the important notes. Now here is written something, that is the food. We have to what is we have to find ways by which more food can be produced in the country. We know some of in our country most of the people can't get the sufficient food to eat, so we have to find the ways to produce more food in our country. Okay, that will not be enough, that will not be enough. We need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. Okay, and there is we have to find the ways to produce the food, and also it should available easily to others, those who are needed. Okay, and please don't waste the food. uh, Now see here the keywords, already we have discussed what is ingredient, edible, nectar, sprouted seeds, herbivorous, carnivorous, and omnivorous. Already we have taken these points into our consideration and I have discussed it, and there is a summary here. If you see the summary also, what is the summary? There is a lot of variation in the food. Already we have discussed this point. Yes, all we have discussed. Please go through the summary. If you want to take notes, if you want to take notes, please take the notes. And yeah, if you want to do the exercise, please go through the exercise too. So until then, we will meet in the next class. Our second chapter is compound components of food. Sorry, components of foods is our second chapter. We will meet in the next chapter. So until then, uh, please until then please share my channel and do subscribe.
make your friends to subscribe my channel if you like my explanation. Okay, so until then, take care. Bye bye.